Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 19th October 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. तो आज का हमारा पहला न्यूज है त्रिपुरा हाई कोर्ट से रिलेटेड एंड रिसेंटली a single bench judge of Tripura High Court recently asked the administrations to take necessary measures to stop the persecutions of two tribal, that is Chakma families that converted to Christianity last year. ठीक है, तो चकमा जो कम्युनिटीज हैं ट्राइबल जो रिसेंट लास्ट ईयर उन्होंने क्रिश्चियनिटी में जो कन्वर्ट हो गए थे, उनको त्रिपुरा हाई कोर्ट ने कहा था कि इनके प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जाएं टू स्टॉप द परसिक्यूशंस ऑफ द चकमा ट्राइब्स। क्या है समझते हैं थोड़ा। सबसे पहले चकमा के बारे में समझते हैं। चकमा आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप नेटिव टू द चिट्टागोंग हिल ट्रैक रीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जो चिट्टागोंग रीजन है उस रीजन में ये लोग रहते थे, वहाँ के नेटिव है ये। एंड दे हैव देयर ओन एज ओल्ड कल्चर लैंग्वेज एंड एज ओल्ड कल्चर उनका है, अपना उनका लैंग्वेजेस है। ये प्राइमरी लिव इन द चिट्टागोंग हिल ट्रैक ऑफ बांग्लादेश, द चीन एंड द अराकान प्रोविंस ऑफ द म्यांमार, इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स ऑफ मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड फ्यू फैमिलीज इन द वेस्ट बंगाल। तो ये कुछ रीजन है जहां पर ये चकमा ट्राइब्स वगैरह रहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। अब बात आती है पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन द चकमा पॉपुलेशन इज एस्टिमेट टू बी अराउंड 5,50,000 के। The majority, like almost around 3 lakh people are located in Chittagong hill tract of Bangladesh. There are also about 80,000 Chakmas in Mizoram states. Religion wise अगर देखा जाए तो majority of the Chakma practice Theravada Buddhism. लोग अभी समझेंगे आखिर Theravada Buddhism क्या है, linked with aspects of animism and Hinduism. ठीक है, and every Chakma village has a Buddhist temple, Kang जिसको बोलते हैं. The Buddhist priest or the monks are called bhikkhus. So basically हर जगह ही बोला है। And the Chakma worship Hindu deities like Lakshmi, who is worshipped as the goddess of the harvest. तो लक्ष्मी जी की पूजा वो लोग करते हैं। नेक्स्ट थोड़ा और समझा जाए तो थेरावाडा बुद्धिज्म के बारे में अगर बोला जाए तो थेरावाडा का मतलब होता है डॉक्ट्रिन ऑफ द एल्डर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज द नेम फॉर द स्कूल ऑफ बुद्धिज्म दैट ड्रॉ इट्स scriptural inspirations from the Pali canon or Tipitaka, which scholars generally accept as the oldest record of the Buddhas. It is one of the two major branches of Buddhism, the old being Mahayana Buddhism, owing to its historical dominance in southern Asia, that is Sri Lanka, Thailand, and Burma. Theravada is also identified as Southern Buddhism, in contrast to Northern Buddhism, which migrated northward from India into Tibet, China, Japan, and Korea. Theravada is sometimes identified as Hinayana, इनको Hinayana भी बोला जाता है. The lesser vehicles in the contradictions of Mahayana, the greater vehicle, which is usually a synonymous for the Tibetan Buddhism. Tibetan Buddhism is related. Next, it is the dominant religion in Cambodia, Laos, Myanmar, Sri Lanka, and Thailand, and is practiced by minorities in Bangladesh, China, Nepal, Vietnam. Okay. And in contrast to Mahayana and Vajrayana, Theravada tends to be conservative in matters of doctrines and monastic. That is regarding the आपका Theravada. Next, Mahayana के बारे में बोला जाए तो region wise अगर देखा जाए तो it is Nepal, Tibet, China, Japan, Korea, Mongolia, and Vietnam. Whereas Theravada के बारे में बोला जाए तो Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Cambodia, and Laos. Based on अगर वज्रायना के बारे में बोला जाए तो ये कौन से रीजन में, तो दैट इज बेसिकली आप कह सकते हो कि सबसेट ऑफ महायाना, ये टिबेटन बुद्धिज्म से एंड नामचक लिनिएज के अंदर में आता है वज्रायना फ्रॉम ऑल बीइंग्स फ्रॉम सफरिंग। तो ये कुछ डिस्टिंक्शंस हैं और ऑल द थ्री जो तीनों जो बेसिस है मतलब पाथ्स जो है वो बेस्ड ऑन द 4 नोबल ट्रूथ, 4 नोबल ट्रूथ के ऊपर में। दैट इज रिगार्डिंग द आपका थेरावाडा बुद्धिज्म। चलिए वो आपको समझ में आएगा। चलिए अपने अगले न्यूज पे बढ़ते हैं। अगला जो अपना न्यूज है वो है एलिफेंटियासिस या जिसको हम लोग फाइलेरियासिस ही बोलते हैं। रिसेंटली आफ्टर बांग्लादेश, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकम द सेकंड कंट्री इन 2023 टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो ये लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज द सेकंड कंट्री who has eliminated the filariasis. अब फाइलेरियासिस समझते हैं होता क्या है। बेसिकली ये एक ऐसा डिजीज है जो मॉस्किटो फैलाता है। इसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो लिम्स वगैरह होते हैं वो
बहुत मोटे होते हैं, समथिंग लाइक leg of elephant. That's why it is known as elephantiasis. It is neglected tropical disease or infections occurs when filarial parasites are transmitted to human through mosquito. Obvious बात है, mosquito फैलाते हैं. This impairs the lymphatic system and can lead to the abnormal enlargement of body parts, causing pain, severe disability, and social stigma. Causes क्या है? It is caused by infections with parasites classified as nematodes, roundworm of the family, Filariidae. There are 3 types of like filarial worms. कौन सा? सबसे पहला Wuchereria bancrofti, which is responsible for 90% of the cases. Brugia malai, which causes most of the remainder of the cases, and Brugia timuri, which also causes the. ये कुछ चीजें हैं, these are most. ठीक है. नेक्स्ट फाइलेरियसिस के बारे में बोला जाए तो ऑब्वियस बात है, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मॉस्किटो एंड एडल्ट लिम्फ में ये जाके एडल्ट के लिम्फ में जाके ये फैलता है, फर्दर ये रीग्रो करता है एंड आफ्टर दैट इट कॉजेस दैट डिजीज. नेक्स्ट ग्लोबल इनिशिएटिव बहुत सारे हैं, जैसे कि एक तो इरेडिकेट लिम्फेटिक फाइलेरियसिस. WHO रोड मैप 2021-2030 सेट्स ग्लोबल टारगेट एंड माइलस्टोन टू प्रिवेंट, कंट्रोल, एलिमिनेट और इरेडिकेट 20 डिजीज. Global program to eliminate lymphatic filariasis. WHO established this to stop the transmission of infection by mass drug administrations of the antihelminthic and to alleviate the sufferings of the people affected by the disease through morbidity management and disability. And according to the WHO progress report on the disease, 19 countries have been able to eliminate it. Of the 19 countries, 11 belong to the WHO Western Pacific region. Laos PDR is 11th country in the WPR region to successfully eliminate lymphatic filariasis. साउथ ईस्ट एशिया रीजन में देखा जाए तो बांग्लादेश, द मालदीव्स एंड थाईलैंड, ये 4 कंट्रीज हैं या 5 कंट्रीज हैं बेसिकली इसको हटाए. अफ्रीका रीजन में मलावी एंड टोगो, ये कुछ कंट्रीज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एंड दिस very important regarding the countries which has removed this. So that is regarding the lymphatic filariasis. नेक्स्ट जो अपना न्यूज है वो है एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS स्टैंडर्ड एंड रिसेंटली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको इंप्लीमेंट किया है. तो किस लिए है? तो टू इंप्रूव रोड सेफ्टी एंड रिड्यूस इंसिडेंट रिस्पांस टाइम, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल इंप्लीमेंट अपग्रेडेड एंड फॉरवर्ड लुकिंग ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन 2020. क्या है ये? अबाउट द, अगर देखा जाए तो एम इज टू एनहांस रोड सेफ्टी, रिड्यूस इंसिडेंट्स रिस्पांस टाइम एंड डिजिटल enforcement on national highway and expressway. कैसे? सबसे पहला, the new standards include the following features. पहला, it provides for the implementation of digital highway by developing integrated utility corridors along the national highway to develop optic fiber cable infrastructure. Under the new standard, the existing video camera will be replaced with the video incident detection and enforcement system, that is BITES, and to emphasize the digital enforcement of the traffic rules. अगर कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करता तो उसको डिजिटली उसके पास जो भी चालान और बाकी जो सिस्टम है वो चला जाया करेगा. For comprehensive coverage, these cameras are slated for installation every 10 kilometers along national highway, and the feed from this camera will be integrated at the command and control center located at every 100 kilometers. तो हर 100 kilometers में एक command and control center लगा रहेगा. दूसरा, the vehicle speed detection system is now integrated into WITES, optimizing use of automatic number plate recognition ANPR cameras. Depending on the detected incident, WITES will alert route patrol vehicles or the ambulance, generate e-challans, relay alert to national nearby variable messaging boards, or send a notification through Rajmarg Yatra mobile app to nearby travelers. ये WITES करेगा ये. That is very high tech. और इससे बहुत हद तक हमारे जो नेशनल हाईवे में जो रोड्स के ऊपर जो एक्सीडेंट होते हैं उसके तहत उसको कम किया जा सकता है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन आवर डेली न्यूज एनालिसिस. आज के लिए इतना है. एंड फॉर PDF lecture of this video, you can download it from our Telegram channel, that is Inspiration IAS. You can also follow our social media page like Facebook, Instagram, and YouTube for such other video content. Thanks for watching, and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook. Thanks for watching, and please do take care of yourself.